লগতে এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ লৈ আহিছো বিজেপিয়ে যেতিয়া বিজয় সাব্যস্ত কৰিছে তাৰ পিছতেই বাজপেয়ী ভৱনত সংবাদমেল সম্বোধন কৰিছে ৰাজ্যৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই মুখ্যমন্ত্ৰী গৰাকীয়ে যেতিয়া চৰকাৰ গঠন কৰিব তাৰ পিছতেই কেইবাটাও ডাঙৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰা হৈছে আৰু ইতিমধ্যে সংবাদমেলৰ জৰিয়তে এই কথা জানিবলৈ দিছে মুখ্যমন্ত্ৰী গৰাকীয়ে যে চৰকাৰ গঠন কৰাৰ পিছৰে পৰা ৰাজ্যত চলিব বৃহৎ উচ্ছেদ অভিযান চলিব ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত এটা কৈ মিয়াক বাংলাদেশলৈ খেদি পঠিওৱা হ'ব আৰু এতিয়াৰে পৰা কিন্তু অসমত মিয়াৰ নিস্তাৰ নাই এই কথা উল্লেখ কৰিছে মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই গতিকে সাৱধান হোৱাৰ পূৰ্ণ সময় আহি পৰিছে মিয়াসকলৰ মাজত এতিয়া হাহাকাৰ লাগিছে পুৱাৰ ভাগতে আমি খবৰ জনাইছো ইতিমধ্যে ৰাজ্যৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই কেইবাটাও ডাঙৰ মন্তব্য কৰিছে আৰু তাৰ ভিতৰত ইতিমধ্যে আমি উল্লেখ কৰিছো যে চৰকাৰ গঠন কৰাৰ পিছৰে পৰা দিনাৰে পৰা ৰাজ্যত কিন্তু বৃহৎ উচ্ছেদ চলিব বুলি মুখ্যমন্ত্ৰী গৰাকীয়ে ইতিমধ্যে এই কথা উল্লেখ কৰিছে এটা কৈ মিয়াক বাংলাদেশলৈ খেদি পঠিওৱা হ'ব বুলি ইতিমধ্যে মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই ডাঙৰ কথা উল্লেখ কৰিছে আৰু কি কৈছে মুখ্যমন্ত্ৰী গৰাকীয়ে মুহূৰ্তত আমি সবিস্তাৰে খবৰ আপোনালোকৰ মাজলৈকে লৈ আহিছো এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ জনাইছো ইতিমধ্যে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে মুখ্যমন্ত্ৰী গৰাকীয়ে ডাঙৰ কথা উল্লেখ কৰিছে মুখ্যমন্ত্ৰী গৰাকীয়ে কৈছে যে এটা কৈ মিয়াক বাংলাদেশলৈ খেদি পঠিওৱা হ'ব আমি গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ জনাই গৈছো চৰকাৰ গঠন কৰাৰ পিছৰ দিনাখনৰে পৰা ৰাজ্যত চলিব বৃহৎ উচ্ছেদ মুখ্যমন্ত্ৰী গৰাকীয়ে উল্লেখ কৰিছে অসমৰ পৰা এটা মিয়াক ধৰি খেদি পঠিওৱা হ'ব বাংলাদেশলৈ অসমত মিয়া থাকিব নোৱাৰিব সম্পূৰ্ণ মিয়ামুক্ত হ'ব অসম বিজেপি জয় হোৱাৰ পিছতেই ডাঙৰ মন্তব্য কৰিছে মুখ্যমন্ত্ৰী গৰাকীয়ে এক প্ৰকাৰ পোনপটীয়াকৈ ধমক দিছে মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই কোনো এটা বাংলাদেশী অসমত থাকিব নোৱাৰিব এজনো বাংলাদেশী অসমত থাকিব নোৱাৰিব কেৱল সংখ্যালঘু সমষ্টিতে ইতিমধ্যে কংগ্ৰেছে ভাল ফলাফল দেখুৱাবলৈ সক্ষম হৈছে তাতকৈ ডাঙৰ কথা আসাদুদ্দিন ওৱেইচি যেতিয়া অসমলৈ আহিছিল বিভিন্ন কথা উল্লেখ কৰিছিল বহু ডাঙৰ কথা উল্লেখ কৰিছিল সেই সমূহ জাদু কিন্তু ইতিমধ্যে নচলিল অসমত সম্পূৰ্ণ এতিয়া অসম মিয়ামুক্ত কৰা হ'ব বুলি ইতিমধ্যে মুখ্যমন্ত্ৰী গৰাকীয়ে জনাইছে অসম পশ্চিম বংগ ত্ৰিপুৰাৰ পৰা মিয়া যাব লাগিব উল্লেখ কৰিছে মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই বাংলাদেশৰ সীমান্তৰ কাইটিয়া তাৰ সম্পূৰ্ণ কৰা হ'ব বুলি ইতিমধ্যে মুখ্যমন্ত্ৰী গৰাকীয়ে কৈছে মমতাৰ দিনত পশ্চিম বংগত সুৰক্ষিত নাছিল চিকেন নেক উল্লেখ কৰিছে মুখ্যমন্ত্ৰী গৰাকীয়ে বাজপেয়ী ভৱনত মুখ্যমন্ত্ৰী গৰাকীয়ে এতিয়া মিয়াক দিছে ধমক আৰু ইতিমধ্যে যেতুকে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে বিজেপিয়ে যেতিয়া বিজয় সাব্যস্ত কৰিছে পশ্চিম বংগটো আৰু তাৰ পিছত শেহতীয়াকৈ খবৰ লাভ কৰা গৈছে মুখ্যমন্ত্ৰী গৰাকীয়ে ডাঙৰ ঘোষণা কৰিছে চৰকাৰ গঠন কৰাৰ পিছৰ দিনাৰে পৰা ৰাজ্যত এতিয়া উচ্ছেদ অভিযান চলিব বুলি জানিব পৰা গৈছে এটা কৈ মিয়াক ধৰি খেদি পঠিওৱা হ'ব এয়া উল্লেখ কৰিছে মুখ্যমন্ত্ৰী গৰাকীয়ে আৰু মুখ্যমন্ত্ৰী গৰাকীয়ে যেতিয়া এই কথা উল্লেখ কৰিছে এই কথা উল্লেখ কৰাৰ পাছত ইতিমধ্যে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে মিয়াৰ মাজত শেহতীয়াকৈ হাহাকাৰ লাগিছে মিয়াসকলৰ মাজত এতিয়া হাহাকাৰ লাগিছে কাৰণ মুখ্যমন্ত্ৰী গৰাকীয়ে যেনেকৈ পূৰ্বতেও এই কথা উল্লেখ কৰিছিল যে যদিহে বিজেপি চৰকাৰ হয় তেতিয়াহ'লে কিন্তু অসমত এটা মিয়া থাকিব নোৱাৰিব বুলি ইতিমধ্যে উল্লেখ কৰিছিল মুখ্যমন্ত্ৰী গৰাকীয়ে আৰু এই মুখ্যমন্ত্ৰী গৰাকীৰ এক প্ৰকাৰ ভৱিষ্যত বাণীও কিন্তু সত্য প্ৰমাণিত হৈছে আৰু শেহতীয়াকৈ আমি আপোনালোকক জনাই গৈছো ইতিমধ্যে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যেতিয়া বিজেপিয়ে বিজয় সাব্যস্ত কৰিছে বিজেপি জয়ী হৈছে বিজেপিৰ এই ঐতিহাসিক জয়ৰ পাছতেই দেখিবলৈ পোৱা গৈছে কৃতজ্ঞতা ভৰাও ভাষণ প্ৰদান কৰিছিল প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে আৰু শেহতীয়াকৈ আমি আপোনালোকক জনাই গৈছো ইতিমধ্যে দেখিবলৈ পোৱা গৈছিল মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই যিটো সংবাদমেল সম্বোধন কৰিছিল আৰু এই সংবাদমেল সম্বোধন কৰাৰ পিছত কেইবাটাও ডাঙৰ কথা উল্লেখ কৰিছে ইতিহাস গঢ়ি অসমত তৃতীয়বাৰৰ বাবে চৰকাৰ গঠন কৰিলে বিজেপি মিত্ৰজোঁটে অভিলেখ সৃষ্টি কৰি 102খন আসনত ইতিমধ্যে বিজেপি মিত্ৰজোঁটে দখল কৰিছে বিজেপিয়ে লাভ কৰিছে 82খনকৈ আসন অসম গণ পৰিষদ আৰু বিপিএফে 10খনকৈ আসন লাভ কৰিছে আনহাতে কংগ্ৰেছ নেতৃত্বাধীন বিৰোধী ঐক্যই লাভ কৰিছে মাত্ৰ 21খনকৈ আসন কংগ্ৰেছে মাত্ৰ 19খনকৈ আসনহে লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে এআইইউডিএফে 2খন আসন লাভ কৰাৰ বিপৰীতে তৃণমূল কংগ্ৰেছে মাত্ৰ 1খন আসন লাভ কৰিছে আৰু তাৰ পিছত যেতিয়া ঐতিহাসিক বিজয় সাব্যস্ত কৰিছে বিজেপিয়ে আৰু বাজপেয়ী ভৱনত মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই ইতিমধ্যে এই কথা উল্লেখ কৰিছে যে চৰকাৰ গঠন কৰাৰ পিছৰ দিনাৰে পৰা ৰাজ্যত
বৃহৎ উচ্ছেদ চলিব এটাকৈ ম্যাদ ধৰি খেদি পঠিওৱা হ'ব বাংলাদেশলৈ মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে যেনেকৈ সংবাদমেল সম্বোধন কৰিছে এই সন্দৰ্ভত আৰু কি কৈছে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে সেয়া আমি আপোনালোকৰ মাজত লৈ আহিছোঁ आज भारत का जीत है, ये कोई बीजेपी का जीत नहीं है, ये भारत का जीत है। भारत और बांग्लादेश सीमा असुरक्षित रहने का कारण हमारे डेमोग्राफी से लेकर सिक्योरिटी तक एक बहुत बड़ा चैलेंज हुए थे। असम में हम जितना भी काम करें, लेकिन भारत और बांग्लादेश का सीमा सबसे ज्यादा लंबा सीमा पश्चिम बंगाल में है। आज ममता बनर्जी ने सरकार को बार बार रिक्वेस्ट करने का बाद भी फेंसिंग बनाने के लिए बीते 10 साल जमीन नहीं दी। राष्ट्र एक प्रकार असुरक्षित हुए। सेकेंड नेक भी वेस्ट बंगाल में ही है। आज ये जो जीत है ये जरूर बीजेपी का जीत है, लेकिन मैं मानता हूं ये बीजेपी का जीत कम और भारत का जीत सबसे ज्यादा। ये देश का विजय हुआ आज पश्चिम बंगाल में, ये देश का विजय है। और मेरा लगता है कि पश्चिम बंगाल का जनता ने हमारे देश का सुरक्षा के लिए ये वोट डाले, मोदी जी का नेतृत्व में वोट डाले। और मेरा लगता है कि इससे पूरे नॉर्थ ईस्ट का साथ बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल सुरक्षित होगा और फेंसिंग का काम जबरदस्त आगे बढ़ेगा। मैं मानता हूं ये राष्ट्र का विजय है। पवन खेरा के लिए मेरा एक कमिटमेंट था कि सुप्रीम कोर्ट ने भी उनको बोल दिया है कि असम का थाना में आके हजीरा लगाने के लिए। बाकी आगे आगे आप फिल्म देखते रहो। आप एक बार हिमंत बिश्व शर्मा कुछ बोलते हैं तो शायद ही हम पीछे पुलक के देखता हूं। तो आप आगे देखते रहे। लेकिन पवन खेरा जी को मैं एक धन्यवाद देना चाहता हूं। पवन खेरा जी का जो एलिगेशन रहा एक असम का बेटियों का ऊपर, इससे लोगों को काफी इमोशनल किया। शायद वो प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करते थे और गौरव गोगोई जी साथ में नहीं बैठते थे, शायद गौरव गोगोई जी नहीं हारते थे सुना। इसलिए वो लांछन मेरा ऊपर नहीं था, एक असम का बेटियों का ऊपर था। तो असम का जनता ने उनको पेरा बना दिया है और आगे जाके थोड़ा मेरा भी जिम्मेदारी बाकी रहेगा, वो भी मैं जिम्मेदारी पूरा करूंगा। कांग्रेस का सारा विधायक अनफॉर्चुनेटली कांग्रेस का शायद कितना विधायक जीते हैं दिखा रखा है, तो 22 में 21 का धर्म इस्लाम है, एक का धर्म हिंदू। मैं ऐसे धर्म का बात बोलना जरूरत नहीं है, लेकिन आपने पूछा है इसलिए मैंने बोला। जितना भी जीते हैं सारे हमारे मुसलमान भाई बहन जीते हैं कांग्रेस का, खाली एक ही हिंदू जीते। और उसमें और एक आप लोग को खबर देना मेरा ड्यूटी है। 2016 में बीजेपी का सरकार हुआ, 21 में रिपीट हुए। बीजेपी का कभी अपने मेजोरिटी नहीं था। इस बार बीजेपी अपना खुद का मेजोरिटी मिले हैं, 80 से ज्यादा सीटें जीते। सर आपने जो कहा वही हो गया, 100 पार असम में, बंगाल में भी 200 पार। देखिए हम जो बोलता हूं वो तो हम नहीं बोलते हो, माँ कामाख्या किसी से बुलवा देते हैं। असम में माँ कामाख्या होते हैं, मैं तो कोई सोच के नहीं बताया था। जब मैं सिलीगुड़ी गया माँ ने मेरा मुंह से निकलवा दिया, क्या असम में 100 बीजेपी में 200 हो गया तो अच्छा हुए। लेकिन इसमें कोई बंगाल का जीत मैं बार बार बोलता हूं राष्ट्र का जीत है। ये बीजेपी से ऊपर राष्ट्र का जीत है। मेरा लगता है कि ये जीत को आधार बनाते हुए प्रधानमंत्री मोदी जी और गृह मंत्री अमित शाह जी देश को सुरक्षित करने के लिए बहुत बड़ा कदम उठा पाएगा। झारखंड में भी ये लोग आते हैं मुर्शिदाबाद होते हुए। मैं असम से किसी को भगाता हूं बांग्लादेश, फिर वो लोग घूम के बंगाल में आने का एक स्कोप रह जाते थे। तो अभी
बंगाल से लेकर मिजोरम तक पूरा हमारा ही अपना सरकार हुए, कम से कम हॉस्टाइल सरकार नहीं, फ्रेंडली सरकार हुए। मेघालय, मिजोरम, असम, त्रिपुरा, बंगाल, ये पांचों मुख्यमंत्री को लेके गृह मंत्री जी एक इंटीग्रेटेड अगर एफर्ट शुरू कर देते हैं, जो मैं मानता हूं उनका मन में भी होगा। गृह मंत्री जी का नेतृत्व में सारे सीएम अगर एक साथ काम करते हैं, पूरा चिकन नेक से लेकर ईस्टर्न एंड नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया सुरक्षित होगा। गृह मंत्री जी ने बीजेपी को जिताने के लिए बंगाल नहीं गए थे, गृह मंत्री जी बंगाल गया था देश को जिताने के लिए बंगाल गए थे, इसीलिए ही अपना समय दिए थे। तो मैं आज प्रधानमंत्री जी और गृह मंत्री जी दोनों को धन्यवाद देता हूं। बंगाल जीत के आप नॉर्थ ईस्ट को सुरक्षित किए, हम लोग सुरक्षित महसूस कर रहा हूं। आज मैं दोनों प्रधानमंत्री जी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आपने बहुत अपना समय दिया, परिकल्पना किया, समय दिया, सामने से नेतृत्व लिया। गृह मंत्री जी ने माइक्रो लेवल में अपने काम किए। मैं नहीं मानता हूं बीजेपी को जिताने के लिए, ममता बनर्जी को हराने के लिए ये प्रयास किया था, ये देश को जिताने के लिए दोनों ने अपना प्रयास किया। देखिए, भारत हमेशा से हिंदू राष्ट्र है और जब तक सान और सूरज रहेगा भारत हिंदू राष्ट्र ही रहेगा। देखिए,